अभी थोड़ा हम हंसी मजाक वाला मेडिटेशन करेंगे, राइट? So to remove all those emotions which we have suppressed in ourselves, we'll do one meditation. In that meditation, you have to express it, whatever it comes from inside. There should be no logic. Like this. No logic or why is nothing. Right? So this is a practical demonstration. Yes, and we start. बट द वर्ड यू यूज ना हाँ. सामने वाले को समझ में नहीं आना चाहिए। हाँ. ठीक है, अगर गाली भी दोगे तो हंस के दो, कुछ भी बोल दो तो गाली भी दे रहे हो Whatever it comes, as if the opposite person is your enemy, whom you want to say something, you want to give some bad words, you want to remove all the suppressed emotions, the anger, the irritation, the frustrations, the depression, whatever you have suppressed. Now you can start. So this has to be done with different time, different person. Okay, so stand up. सभी के साथ करना है। से है ना, हमने बहुत सप्रेस किया है बिकॉज हमें पाप पुण्य, डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशन, ये सब चीजें हमें सिखाई गई है। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉकेज सबसे ज्यादा है। अगर आप ऑरा में देखोगे तो मैक्सिमम ब्लॉकेजेस यहाँ पे हैं बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू फ्रीली एक्सप्रेस अवरसेल्फ। सो ये मेडिटेशन ओशो ने इस तरह से डिजाइन किया था कि आप अलग अलग तरीके से, मतलब लैंग्वेज में, वर्ड्स में, किसी भी तरह से उसको एक्सप्रेस करो, बाहर निकालो। यू डोंट हैव टू यूज एनी लॉजिक। और उस टाइम पे खो जाना चाहिए, सामने वाले के एक्सप्रेशन नहीं देखना है। अभी आप क्या कर रहे थे, एक्सप्रेशन देख रहे थे कि भाई मैं ऐसे कर रही थी तो वो कैसे, वो इमिट लग रहा था, वो नेचुरल नहीं लग रहा था। समझ में कि नहीं? नेचुरल कब लगेगा? जब आप सही में बच्चों के जैसे करते हो। बच्चे देखते भी नहीं इस तरह से बिहेव करते वक्त, भाई पेरेंट्स को बुरा लग रहा है या सामने वाले इंसान को बुरा लग रहा है या मेरे फ्रेंड्स को, ब्रदर सिस्टर को बुरा लग रहा है, बस वो जिद पे अड़े रहते हैं। तो किसी भी तरह से वो अपनी भड़ास निकालता है। समझ में कि नहीं? उसके हाथ में जो भी चीजें होती तोड़ फोड़ कर देते हैं। वो सोचते भी नहीं इतनी कीमती चीजें थी या मेरी भी नहीं थी, उसका खिलौना था, वो भी तोड़ देते हैं। राइट? तो इस तरह से बाहर निकलना चाहिए। जब तक बाहर ही नहीं निकलेगा, आप कितनी चीजों को और सप्रेस करोगे। तोड़ने फोड़ने लगे तो क्या? इसलिए आपको मैंने वो वीडियो क्यों दिखाई, उसमें आपने देखा कि वो बच्चे ना ऐसे जमीन पे ये कर रहे थे। तो वो भी एक तरीका है करने का, और ये दूसरा एक तरीका है कि जहाँ पे हम सामने, बिकॉज अभी तो क्या हम सब साथ में हैं तो ये करना इजी है करके। लेकिन अगर सपोज घर में करना है तो दो तरीके, या तो मिरर के सामने करो या इस तरह से जो बच्चों ने अभी किया कि जब भी हम अकेले रहते हैं नॉर्मली हम रोते हैं करके, डिप्रेशन में बैठ जाते हैं। इससे तो अच्छा है बस हम किसी भी तरह से वो एंगर है वो निकाल दे, बिकॉज नहीं तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, आपकी जो भी ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, है ना? Then you will start developing the blood pressure, headache, migraine, so many diseases you will start getting. Instead of that, just throw it out, whatever it is that, इसको catharsis कहते हैं. The process is called catharsis. All meditations which removes all the negative energy from your mind and from your heart, from emotion, they are called catharsis. बॉडी से जो कचरा निकलता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, माइंड से जो निकलता है कैथारसिस कहते हैं. So why we are doing this meditation? Because now we are going to start with past life regression, right? So this subject, before starting the subject, we need to learn how to empty it. We have learned now how to heal the person, but we have not learned how to empty ourselves. Because two things has to be done in this regression: empty and healing, right? So this was the way you have learned how to empty yourself. So allow the person to express it. ये मेडिटेशन अगर आप करोगे ना तो घर में जो भी लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं ना उनको भी आप रिस्पेक्ट करोगे. उनका एंगर जब भी निकलेगा तो आप समझोगे कुछ तो निकल रहा है इसका, इनको निकालने दो, हमें उसको रिएक्ट नहीं करना है. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इफ समवन इज वेरी एंग्री, यू आल्सो स्टार्ट बिकमिंग एंग्री ऑन देम. सो दिस इज रिएक्शन टू रिएक्शन. Am I right? So one has to take the pause, one has to be the silence, right? So you have seen in this meditation when someone was expressing it, you are just observing it. So you have to be very good observer. Spirituality में witness करना है, aware रहना है, react नहीं करना है. So you don't have to react to anything.
उसके अंदर कुछ तो है ना, तभी वो भड़ास निकाल रहा है. Something is there ना. You are not understanding what it is inside, right? So it's like in your aura, so many negative energies are there, and through some circumstances, some incidences, he tries to throw everything out. So ये पंक्चर होता है, जैसे बलून में बहुत हवा होती है, किसी ने एक टांचनी मारी, एक पिन मारी तो क्या होता है? फट जाएगा. तो हमारा भी ऐसा ही होता है. फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बहुत सारी चीजें, फियर, सो मेनी थिंग्स आर देयर इनसाइड. समवन शुड जस्ट ट्रिगर इट, वी जस्ट बस्ट आउट. सो दैट बस्टिंग आउट हैज नो लॉजिक. हम लोग बोलेंगे छोटी बात थी, इतना बड़ा पतंगड़ बना दिया. हम कहते कि नहीं, इट वाज अ सो स्मॉल थिंग एंड ही मेड अ बिग हैवोक ऑफ इट. It was not about this incidents. It was accumulation of all those negative energy which he has carried in his subconscious mind, and through some way he had to throw out. Right? So this way, at least once in the week you have to do it. Once in the week is compulsory for you. Otherwise you will start accumulating some emotions in your liver, kidney, heart, spleen, pancreas, and you will start developing some diseases. Some will start suffering from sciatica, spondylitis, because it will sediment in your nerves, it will sediment in your blood vessels, it will sediment in your bones, and then you will start developing some issues. So all those people who are having your pain somewhere, whether in the body, the head, somewhere, any of the region of the body, means you have holded something and you have to just release it. Is it right? The moment you release it, you will be free. This is very important, right? So every time to be in discipline wouldn't work. Somewhere you have to be very naughty. Somewhere you have to break certain laws. You have to activate your inner child. Right? So don't be always adult. Sometimes be like a child. Activate your inner child and be very innocent, very pure, unconditionally, and without any logic you have to just behave. That is the inner child. Right? So this is very beautiful meditation Osho has developed. So at least once in the week you try to use, especially when you feel that I think so now it's so much heavy in me, whether it's in body, in heart, somewhere it is heavy in me, then start doing this meditation. Right? So this body action, this is all biosensor. As Nalini Aunty showed you, all the 5 elements are here. So once you start tapping it, all the sensations will start releasing all those negative things which you have holded in your blood vessels, in your nervous system, in your venous system, in your lymphatic system, in your meridians, in your different channels, nadis, whatever you have holded, it will start coming out. Right? So whole past life regression procedure is like relaxing the mind, relaxing the body, and then it will bring out whichever is the most significant event of your life, whether the present life or past life, whatever you have holded, so many days, years, months, or lives, whatever you have holded, now it will come out. So initially this gibberish meditation will be like artificial, but when seriously if you do it for 15-20 minutes, then really that will come out and it will bring tears out of you. Yes. Till that you have to do it. Initially let it be very fun, but by doing this in a funny way, you will be actually very serious, and then you will really start crying, screaming, shouting very loudly. Then you will not you will be able to control it. Am I right? Till that you have to do. Today you have stopped it between, because it was a funny way, so you started laughing it and you stopped it between. But actually you shouldn't stop it. You should continuously do it. Then what time will come? Actually things will come out. The same way is in dynamic meditation. The meditation is for 1 hour, dynamic meditation. We are doing only for 20 minutes. Every step is for 20 minutes. 20 into 5, it's a 1 hour meditation. So every step needs 20 minutes to give the result, to bring the result out of you. But in between we have to stop because you are not so used to of these things, right? So anything if you persistently do, if you do it continuously, then you will get the result. Otherwise it will be just a tester. It will be like a test dose, testimonial. Nothing, you are not going to get any result, right? So maybe tomorrow if we get time and if we do this gibberish meditation, it should be done very seriously and then see what outputs you are getting.